भारत बचाओ। This will be Honorable Sri Chief Minister of Bihar, Honorable Sri B.K. Sahi, Minister of Education, Government of Bihar, distinguished guests, dear students, especially graduating students and their parents, media associates, and at very outset, let me extend a very warm welcome to each one of you at the Central University's Bihar first convocation. We are extremely grateful to our chief guest and honored special guest for taking pains to grace this occasion. CUB is fortunate in having Honorable Srimati Meera Kumar as the first Chancellor of the University. Her advice and guidance are invaluable for the growth of the university and an inspiration to all of us. The graduates of the first three batches are privileged to receive blessing from all the dignitaries. Congratulations to all graduating students. Central University of Bihar believes you are our real heroes. We take a moment to acknowledge each one of you, your parents and families. Without your wholehearted support and faith, CUB would not have grown from strength to strength. The quiet trust and confidence you repose in Central University of Bihar sets the institution on the path to building a solid foundation. Global focus. The university maxims of learning together drives its policy of inclusive education. Our success story can be contextualized, are placed in jobs, 32 are pursuing MPhil and PhD in institution of repute, and 36 are engaged in a scholarship-aided research program funded by UGC, GATE, Inspire, and ICAR. The Government of India, UGC, and the state government. Furthermore, with deep sense of gratitude, I owe contribution of nearly 500 experts in Shaping and Development Board and Building and Works Committee for devoting time, energy, and quality ideas. This is also a moment to acknowledge and appreciate all colleagues and administrative staff for their silent and rock-solid support which aided CUB's growth. Has been called to confer degrees upon the candidates who, in the examinations held for the purpose, have been certified to be worthy of the same. Let the candidates stand forward. Do you sincerely promise and declare that on
award of degrees, you will become light years in thought, word, and deed, and will sustain and enhance sound learning, make efforts for the welfare of living organism, society, and the nation. Let the candidates be now presented. Under in absentia. Central University of Bihar, I admit the candidates present and those who are absent to their respective degrees of postgraduate of this university and charge them that in their life and conduct they prove themselves worthy of the same. बोलिए कम थोड़ा, आप ज़्यादा तेज मत बनिए। First university graduate for the academic session 2010-12. Ms. Thakur Aditi Vishnu, First University graduate for the academic session 2011-13. सिल्वर मेडल राष्ट्रपति जी जनाब मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, लोकसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी, प्रोफेसर निहाल जी, कुल सचिव बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस सभागार में उपस्थित बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मेधावी छात्रगण, अभिभावकगण, देवियों एवं सज्जनों, हम सब कृतज्ञ हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी, आप बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में आज उपस्थित हुए। यह अत्यंत राज्य के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की 2009 में स्थापना के इतने कम अंतराल में प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एवं समस्त राज्य की तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। महामहिम जी, इस राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रयास से 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने मोतिहारी, जो बापू की कर्मभूमि रही है, वहां केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 200 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी है एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। लोकसभा की माननीय अध्यक्ष और केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति जी,
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री पी शाही जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे जी, कुल सचिव प्रोफेसर निहाल साहब, परीक्षा नियंत्रित, बात एक जगह पर अटकी हुई थी कि इसको बनाए कौन। BIT मिश्रा का प्रबंधन इसको बनाए या बिहार सरकार का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बनाए, भवन निर्माण विभाग बनाए। ये विषय मेरे सामने आया। स्वाभाविक है, सरकार के जो विभाग होते हैं उनको लगता है काम है, उन्हीं का ये दायित्व है, उन्हीं को बनाना है, सरकार को बनाना है। लेकिन उसको भी लगा कि अगर BIT मिश्रा के लोग बनाएंगे तो जल्दी बना सकते हैं। तो यहाँ इसका स्मरण हो आया कि पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं आज गेस्ट के रूप में। वो हमसे मिले और इनके अन्य सहयोगी, मैंने एक शर्त इनके सामने रखी और कहा ये कि अगर आप पहला बैच, जबकि इनके लिए जगह का इंतजाम किया जा चुका था, सिन्हा इंस्टीट्यूट में इनको जगह दी जा चुकी थी जहां से ये अपना इंस्टीट्यूट का काम शुरू करते। हमने कहा कि ये पूरा पैसा आपको दिया जाएगा, आप बनाइए। शर्त हमारी एक ही है कि 2006 में जब पहला बैच का एडमिशन हो तो उसकी पढ़ाई भी कैंपस से शुरू होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए लोग झिझके, हमने कहा सोच लीजिए। तीनों ने कहा कि ठीक है, मंजूर है। काम तो थोड़ा कठिन है लेकिन मंजूर है। और इन्होंने मंजूर किया और मुझे खुशी है, सितंबर महीने में 2006 में, ये 2005 के दिसंबर की बात है, और 2006 के सितंबर में बिल्डिंग का उतना काम पूरा हो गया कि कैंपस से ही BIT मिश्रा का पटना कैंपस प्रारंभ हुआ। पहले बैच का एडमिशन यही हुआ, यही पढ़ाई। और इसका दो फायदा हुआ। एक सामने उदाहरण हुआ कि कोई चीज के बारे में फैसला होता है तो उसको कैसे लागू किया जाता है। और आज देख रहे हैं इसका एक भव्य रूप। और इनके पास इतनी जगह है कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी अपने यहाँ स्थान दिए हुए। और यही नहीं, ये चूंकि अपने कैंपस में आ गए तो हमारे पास सिन्हा इंस्टीट्यूट की कुछ जगह थी, वो उपलब्ध हो गई और वहां चाणक्य विधि विश्वविद्यालय का काम शुरू हुआ। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला हम लोगों ने किया और जहां से इनको काम करना था वो जगह खाली हो गई, इनको जरूरत नहीं रही, तो वहां से चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी शुरू हुआ। तो बिहार में पिछले कुछ वर्षों में अनेक संस्थान बने। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी सबसे पहला तो BIT मिश्रा का पटना कैंपस, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। हम लोगों ने कोशिश की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने केंद्र सरकार से कहा निफ्ट भी यहां प्रारंभ हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कोशिश की केंद्र सरकार ने भी, उस समय अर्जुन सिंह जी केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। IIT पटना, ये सारे संस्थान खुले। तो कई संस्थान, और मुझे खुशी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खुल गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां लोकेटेड हो इसको लेकर हम लोगों से राय मांग ली गई थी। हमने मोतिहारी की राय दे दी थी। नहीं मांगते जहां चाहते, जब राय मांगी तो राय दे दिया कि मोतिहारी में खोलिए, बापू की कर्म भूमि। तो विवाद चला, लेकिन अंततोगत्वा हर विवाद का समाधान होता है और अच्छा समाधान हुआ। 2 विश्वविद्यालय मिल गए, इससे अच्छी बात क्या हो। एक गंगा के उत्तर और एक गंगा के दक्षिण। एक विश्वविद्यालय बापू की कर्मभूमि में और एक विश्वविद्यालय गया में, जहां भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो 2 विश्वविद्यालय हो गए। यहाँ तो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी मौजूद हैं। हम कहेंगे कि यूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नामकरण उन्होंने कहीं अन्यत्र नहीं किया है,
अभी विधेयक है, विचाराधीन है, तो उसमें एक संशोधन कर दिया जाए, गया वाले को गौतम बुद्ध के नाम पर और मोतिहारी वाले को बापू के नाम पर कर दिया जाए। जब वो विश्वविद्यालय हो रहा है तो ऐसे कोई और कौन नहीं जानता है भारत की आजादी की लड़ाई जो एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सकी, वो तो 1917 में बापू जब चंपारण गए और चंपारण सत्याग्रह के बाद ही वो शुरू पाया। तो उस स्थान को जो बापू के साथ जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपिता के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनका नामकरण करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा 1 से 2 हो ही गया तो नाम वाला भी कर लीजिए। मैं समझता हूं कि जरूर। और श्रीमती मीरा कुमार जी तो यही की हैं, उनको भी लगेगा कि ठीक ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी अगर इसके लिए सहमत हो जाएंगे तो एक बड़ी बात होगी। जब ये बता देंगे दिल्ली में केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को, तो मेरी समझ से कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो बिल आने ही वाला। और जब बिल आएगा ही एक संशोधन के लिए, तो जरा नाम का भी संशोधन हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ज्यादा खुशी हो। और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत है कि लोगों के दिल किया हुआ है। आज इस अवसर पर उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। और राज्य सरकार की तरफ से भी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, मोतिहारी के लिए हम लोग 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने कलेक्टर के यहाँ भेज भी दिया, जो अधिग्रहण के लिए पैसा लगेगा। पहले 100 करोड़ की बात की, वो बढ़कर 200 करोड़ हो गया। जो भी लगेगा हम लोग उसको 300 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके उपलब्ध कराएंगे, वहां हो। और गया तो खैर डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन है और वो भी बहुत अच्छी जगह पर है, हमने स्वयं भी उसको देखा है। तो मेरी समझ से की, और बिहार शिक्षा के दृष्टिकोण से इन दिनों यूं तो ये ज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला के बाद जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, दुनिया भर के लोग वहां आते थे। और एक खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी स्थापित करने की पहल हो चुकी है और उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिहार शिक्षा के मामले में पिछड़ा है। हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाए उसमें कोई एतराज की बात नहीं, बाहर अगर इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन यहां भी अब तो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और निजी क्षेत्र में भी खुले। हम लोगों ने निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए भी कानून बना दिया है, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ इंस्टीट्यूशंस खुले। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने, वाइस चांसलर साहब ने बताया कि अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट्स और कई चीजों की शिक्षा देंगे, मुझे खुशी है। और यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से बिहार में अभी भी जो हायर स्टडीज के लिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जाते हैं, तो जो एवरेज है देश का नामांकन का दर, उससे कम है बिहार का। इसमें वो शामिल नहीं है जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। यूं तो अगर बिहार में बहुत ज्यादा कॉलेज खुल जाएंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि शायद बाहर के बहुत कॉलेजेस का क्या होगा इसका पता नहीं। अगर यहाँ कॉलेज काफी संख्या में खुल जाए तो बहुत जगह पर जो कॉलेज चलते हैं वो बिहार के और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बदौलत बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं देश भर। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतने इंस्टीट्यूशंस हो, क्वालिटी के लिए चॉइस के हिसाब से लोग जाएं, मजबूरी में न जाएं। और इन दिनों यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए भी काफी प्रयत्न हुआ है। हमारे नए राज्यपाल महोदय जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, उन्होंने रुचि भी ली है और ऐसी संभावना है कि आगे के दिनों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में, उसकी गुणवत्ता में, उसके बेहतर संचालन में काफी सुधार आएगा। और कुल मिलाकर जो हम लोगों की कोशिश है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में, तो उसी अनुरूप उच्च शिक्षा में भी सुधार आएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा योगदान
बिहार की शैक्षणिक प्रगति में और फिर से पुराने गौरव को बहाल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वे अपना नाम, अपने परिवार का, अपने इलाके का, अपने सूबे का और अपने देश का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कब मुझे युवाओं से, नई पीढ़ी से मिलने का मौका मिले। आज जब यह मौका मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। मन उल्लास और ऊर्जा से भर गया है, मानो धूल भरी आंधी के बीच अचानक शीतल पवन का झोंका आ गया हो। मैं उन विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ जिन्हें स्वर्ण पदक और स्नातकोत्तर उपाधि मिली है। बिहार की भूमि शताब्दियों से गौरवशाली उपलब्धियों से भरी रही है। यह न केवल साम्राज्य निर्माण के लिए जानी जाती है, अपितु क्रांतिकारियों, विद्वानों, मनीषियों और अहिंसा के पावन संदेश वाहकों की जन्मस्थली भी रही है। यह स्वाभाविक ही था कि ऐसा प्रांत शिक्षा के क्षेत्र में विश्व कीर्ति अर्जित करे। हमें गर्व है कि नालंदा और विक्रमशिला में दूर दूर से ज्ञान पिपासु आया करते थे, जिनमें से इंसान के अनुभव इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का अमूल्य योगदान है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ के गुरुकुल दीप श्रृंखला की भांति ज्ञान का आलोक फैलाने में प्रयासरत रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय शिक्षा केवल तथाकथित उच्च अभिजात्य वर्गों तक ही सीमित थी और शोषित, उपेक्षित, पसीना बहाने वाले सर्वहारा वर्ग की नियति में थी वज्र कठोर वर्जनाएं और अशिक्षा का गहन तिमिर। जो सक्षम थे उन्होंने शिक्षा का प्रयोग अमोघ अस्त्र की तरह अपने को और शक्तिशाली बनाने और दूसरों पर आधिपत्य जमाने के लिए किया। जिस शिक्षा को जन जन तक पहुंचना था उसे स्वार्थ के संकीर्ण घेरे में बंद कर दिया गया। भेदभाव के इस गहरे आघात ने समाज को विकृत कर दिया। गिने चुने लोग बहुत आगे बढ़ गए और अधिकांश पीछे छूटते चले गए। सदियों से उपजे इस विकट असंतुलन के दुष्परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। हालांकि आधुनिक युग में भारत ने शिक्षा के विस्तार का कदम उठाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में निरंतर कार्य भी हुआ, पर शिक्षा से समाज में जिस परिवर्तन की उम्मीद की गई वह पूरी नहीं हुई। आज यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा केवल आजीविका पाने, जीवन स्तर ऊंचा उठाने या अपना वैदुष्य सिद्ध करने का माध्यम बनकर न रह जाए। उसमें सड़ी गली रूढ़ियों और सामाजिक विषमता को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत भी होनी चाहिए। हमने लोकतंत्र अपनाया क्योंकि हम समता चाहते थे। जो कमजोर हैं, हाशिए पर हैं, किसी गिनती में नहीं, लोकतंत्र में उन्हें समान अधिकार मिले। वे देश के भाग्य निर्धारण में बराबर के भागीदार बने। लोकतंत्र बराबरी लाने का सबसे सशक्त माध्यम है, किंतु समाज पर जाति व्यवस्था की मजबूत पकड़ के कारण लोकतंत्र का सही स्वरूप उभर कर सामने नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था गैर बराबरी पर आधारित है और लोकतंत्र का आधार है बराबरी। इसलिए दोनों साथ नहीं चल सकते। हमारे लोकतंत्र की विडंबना यही है कि इस पर जाति व्यवस्था हावी है,
पहले कि इसका बोझ असह्य हो जाए, हमें येन केन प्रकारेण इससे मुक्ति पानी ही होगी। शिक्षा में भी लोकतंत्र की भांति भेदभाव दूर कर बराबरी लाने का अद्भुत सामर्थ्य है। यही कारण है कि 2009 में शिक्षा के अधिकार को संसद ने मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा पर हमारी सारी आशाएं, सारे विश्वास टिके हुए हैं। हमारा मानना है कि शिक्षा में वह चमत्कार है जो शांतिपूर्ण क्रांति कर दे, एक नया बिहार ले आए। पर यह तभी संभव होगा जब सबको समान शिक्षा मिले, निर्धन छात्रों को भी वही शिक्षा मिले जो सुविधा संपन्न छात्रों को मिलती है। भारत के नौजवान आज दो तरह की शिक्षा प्रणाली के बीच विभक्त हो गए हैं। इस समस्या का निदान युद्ध स्तर पर होना चाहिए और मेरी प्रबल इच्छा है कि हमारा विश्वविद्यालय इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो। बिहार राज्य के प्रति भी हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम इस संस्थान को इस योग्य बनाएं कि अन्य राज्यों की ओर भारी संख्या में जो छात्रों का पलायन हो रहा है वो रोका जा सके। 21वीं शताब्दी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। वे केवल होनहार स्नातक ही न पैदा करें, बल्कि अनेक वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर शोधकर्ता और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने में भी सक्षम हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में उच्च शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर है, जिसमें इस विश्वविद्यालय सहित 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का उपबंध किया गया है। मुझे विश्वास है कि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इस गुरुतर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर स्वयं को विश्व स्तरीय संस्थाओं के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। एक अभिनव और अत्यंत महत्वपूर्ण पहल जो हमारे विश्वविद्यालय ने किया है वह है कला और शिल्प केंद्र की स्थापना, जिसके अंतर्गत 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के उपरांत कला और शिल्प में स्नातकोत्तर उपाधि दी जाएगी। भारत अपने शिल्प के लिए विश्वविख्यात है, पर देश में दस्तकारों, कारीगरों, बुनकरों की दुर्दशा हो रही है। उनका हुनर जो पीढ़ी दर पीढ़ी और चमकाया जाता रहा है, अब लुप्त प्राय है। शिल्पकारों और उनके शिल्प को आगे बढ़ाने का कार्य अब यह विश्वविद्यालय करने जा रहा है। देश का कोई भी विश्वविद्यालय संभवतः पहली बार ऐसा कर रहा है। मैं समझती हूँ ये अपनी किस्म का प्रथम प्रयोग है। व्यक्तिगत रूप से मुझे इससे जो आत्मसंतोष मिल रहा है उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती। मैंने संसद में भी शिल्पकारों से संबंधित एक संसदीय मंच बनाया है। हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को पाटना। विश्वविद्यालय अधिकतर शहरी क्षेत्रों में स्थित है। यदि हमें अपनी सामाजिक प्रगति को समावेशी बनाना है तो ग्रामीण युवाओं की उच्च शिक्षा पर भी समुचित ध्यान देना होगा। भारत के गांव में मानव ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और आकांक्षाओं का विशद भंडार है। यह विश्वविद्यालय कला के निकट बनेगा जहां से ग्रामीण अंचल दूर नहीं। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारंपरिक जानकारी, शैक्षणिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल का बखूबी विकास कर उसकी अपार संभावनाओं को बौद्धिक संपदा के रूप में परिवर्तित करेगा। विश्वविद्यालय और छात्रों के जीवन में पहले दीक्षांत समारोह का ऐतिहासिक महत्व होता है। इसलिए आज का दीक्षांत समारोह इस संस्थान, छात्र छात्राओं, शिक्षक जन के विद्वत मंडल और कर्मचारी गण के लिए अभूतपूर्व है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस विश्वविद्यालय को सफलतापूर्वक
पूर्वक स्थापित और आरंभ करने में आपने जिस लगन और परिश्रम का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। यह अभी शैशवावस्था में है, पर मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में ये भारत के सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बना लेगा। मेरी शुभेच्छा है कि सभी व्यवधानों को लांघकर ये अपने लिए नए क्षितिज के द्वार खोले। संवेदनशीलता, शोध कार्य, अध्ययन, अध्यापन और शिक्षा प्रणाली में इसका स्तर इतना ऊंचा हो कि दुनिया में जहाँ भी प्रबुद्ध जन के बीच चर्चा छिड़े, इसका नाम आदर से लिया जाए। गत 3 वर्षों इस विश्वविद्यालय को कुलपति प्रोफेसर जनक पांडे ने जो नेतृत्व और दिशा निर्देश दिया है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। कुलाधिपति होने के नाते मैं इस विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का सपना संजोए इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, इसकी सेवा में सदैव उपलब्ध हूँ। अंत में मैं छात्रों छात्राओं से अपने मन के उद्गार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप उच्च शिक्षा के साधक होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार भी हैं। पहला है, जाति प्रथा को तोड़ डालिए, उससे मानव अधिकार का हनन होता है। दूसरा है, दहेज प्रथा को पूरी तरह समाप्त करिए, उससे स्त्री का अपमान होता है। और तीसरा है, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करिए, उन्हीं के त्याग और आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे बढ़ेंगे। Honorable Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar ji, Honorable Speaker, Lok Sabha and Chancellor of the University, Meera Kumar ji, Honorable P.K. Shahi ji, Education Minister Bihar, Vice Chancellor Professor Janak Pandey, Registrar of the Central University of Bihar, members of the faculty and staff, dear students, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am happy to be back in Patna and on the occasion of the first convocation of the Central University of Bihar. Coming to this ancient land of wisdom and knowledge of Nalanda and Vikramshila is a matter of intellectual satisfaction, more so today when we award degrees to the first batch of graduating students since the university was set up in the year 2009. I take this opportunity to extend my felicitations to them. As they step out of the familiar confines of their alma mater and enter the real world of myriad challenges and boundless possibilities, I urge them to work tirelessly for nation building and to contribute to inclusive social and economic development in the country. Recognizing the importance of education in national development, the Central University of Bihar is among the 16 newly established central universities set up by the government with the objective of improvement of the social and economic conditions and welfare of the people, their intellectual, academic and cultural development. The Central University of Bihar is expected to become a role model for and contribute to the strengthening of other institutions of higher education in the region. It is expected to evolve new formats that will link education to social and economic development
for the welfare of the people of the state and the country. Amongst these are the Master's Program in Development Studies, Biotechnology, Bioinformatics, Computer Science, Environmental Science, Communication, and Media Studies. And I must mention the new 5-year integrated program that the Honorable Chancellor has just mentioned. A university built its reputation largely on relevant and innovative courses, quality teaching, and incisive research. A faculty that brings out the best in the students is integral to the effort. I am confident that in the years ahead, the state of Bihar will get a boost on its journey of progress and prosperity from the contributions of this university and its alumni. This work in the service of the nation should not be seen as a charitable gesture. It is a social, economic, and moral imperative. We need to remember at all times Gandhiji's advice that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Friends, education has been recognized as the most important instrument for social, economic, and political transformation of society. A well-educated population equipped with the relevant knowledge and appropriate skills is essential for economic and social development in this age. Education is a potent tool for socio-economic mobility and a key input for building an equitable and just society. It provides skills and competencies for economic well-being. It strengthens democracy by imparting to citizens the tools needed for effective participation in the governance process. In a divisive society like ours, education acts as an integrative force, imparting values that foster social cohesion, communal harmony, and national integrity. In the rapidly changing and integrated world of today, when scientific and technological development and innovation are bringing a seminal transformation in human civilization, much focus has been on education and skill development to match the demand for high quality and trained human resources generated by this unprecedented progress in human society. In the Indian context, quality, affordability, and accessibility have been adopted as guiding mantra for the development of our national education system. Emphasis has been laid on skill development, vocational training, promoting technical education, enhancing employability, establishment of innovation institutions, expansion of existing institutions and building new ones, with a focus on better quality in research, infrastructure, faculty, and curriculum content. If the initiatives taken by the government and the private sector relating to these objectives are implemented successfully, India is likely to have a world-class education system fully integrated with the global marketplace, which will be the driving force of our emergence as a modern and prosperous nation state in which our people will enjoy the benefits of a peaceful, just, and harmonious society. Ladies and gentlemen, integration with the world of the 21st century will also be contingent
on subscribing to and practicing the globally accepted value system relating to governance. One important aspect of it that I wish to touch upon today relates to the protection and promotion of human rights. This audience knows well that some of Emperor Ashoka's edicts are perhaps the oldest pronouncements on human rights. The relevance of human rights in the modern world is best described by the former Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan. We will not, he said, enjoy security without development. We will not enjoy development without security. And we will not enjoy either without respect for human rights. Human rights are freedoms to which we are entitled by virtue of being humans. They are based on the principle of respect for the individual and the fundamental assumption that each person is a moral and rational being who deserves to be treated with dignity. They are an important input in the higher evolution of human societies, and at the same time, they are an end product of that process. The core principles of human rights have been reiterated in numerous international human rights conventions, declarations, and resolutions. These include universality, independence and indivisibility, equality and non-discrimination, as well as the assertion that human rights simultaneously entail both rights and obligations from duty bearers and rights owners. These were formalized in the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations General Assembly in December 1948. It covers the entire gamut of human rights which are basic to human dignity and freedom. Over the years, these have been supplemented and amplified in other declarations that cover the right to life, freedom of speech, religion and voting, as well as the right to food, education, health and shelter. 20 more conventions prohibit specific abuses such as torture and genocide and protect specific vulnerable populations such as refugees, women and children. Other conventions cover racial discrimination, prevention of genocide, political rights of women, prohibition of slavery and torture. They are reflective of universal validity, relevance and acceptance as the accepted norm for human conduct in modern civilized societies. India has adhered to all of them, but is yet to ratify some, including the Convention Against Torture. Taking cognizance of the importance of protecting and promoting human rights in building a developed nation state, the founding fathers of our republic enshrined in the Constitution of India most human rights contained in these basic documents on human rights. This is evident from the contents of parts 3 and 4 of the Constitution. These were supplemented by the Protection of Human Rights Act of 1994 and many decisions of the higher judiciary, particularly in the past 2 decades. Significant correctives have been made. Amongst them are abolition of abhorrent practices like untouchability,
female feticide, discrimination on the basis of work and descent. Each of these has been made punishable under law. Affirmative action in favor of marginalized and deprived sections of society to ameliorate their lot and empower them has been taken and made justiciable for enforcement. Bonded laborers have been freed and rehabilitated. Judicial pronouncements have opened up new avenues for the realization of justice, and corrupt public officials and policemen have been prosecuted. The statutory institutions for preservation and promotion of human rights, such as the National and State Human Rights Commissions, are actively seized of other issues such as abolition of child labor and manual scavenging, protection of women's rights, protection of Dalits, tribals and other vulnerable segments of society against atrocities, provision of relief and rehabilitation of natural disaster affected population, right to food and health, protection of rights of differently abled persons, and HIV or stroke or AIDS patients. 6 decades on, the requisite intellectual, legal and institutional framework for the protection and promotion of human rights is in place in our country. Questions do, however, arise in regard to their efficacy in actual implementation, as cases of discrimination based on religion, caste, language, ethnicity, creed, work, descent, and economic status continue to be reported. They relate both to the violation or denial of human rights by state agencies and to the violation or denial of rights by individuals and groups of individuals to groups and individuals. The weak individual or group is invariably the victim. It would suffice to mention the typology of the need for more concerted action on the part of India to meet its human rights obligations. Amnesty International, in its country report on India for the year 2013, maintains that torture and other ill treatment, extrajudicial executions, deaths in custody and arbitrary detention persist in India. Victims of human rights violations and abuses are often frustrated in their quest for justice, largely due to ineffective institutions and what it calls a lack of political will. Many of the shortcomings mentioned in these reports have also figured in periodic reports of some national NGOs, in the media and in Parliament. It is evident, therefore, that there is at times a gap between what the official agencies project and what is perceived to be the situation on the ground. One reason for this is wider public awareness of human rights norms. Another is the extent and speed with which defaults or alleged violations are brought to public notice. Many new issues have become part of the human rights agenda and will remain crucial in the coming decades. The conflict over natural resources, the issue of gender equality, and the increasing incidence of gender violence and of caste, communal, ethnic and subnational conflicts amongst communities, and environmental implications of
some development projects are examples of these. Human rights abuses by non-state actors such as violent insurgent groups, terrorists and extremists, both from the left and the right, have also emerged as a significant challenge. Faced with these candid assessments, how should we as a society react to them? One possible reaction is to dismiss them as devoid of veracity or denounce them as the work of hostile elements. The other is to respond to them in a mature fashion. I submit that in a vibrant and robust democracy like ours, there is no shame in acknowledging the faults and the lacuna that exist in the policies and institutions pertaining to human rights. Our point of reference should be the Constitution of India and the principles, rights and duties enunciated therein for times. We as a nation have to awaken our collective conscience. We also need to strive for global standards. I am confident that through the collective efforts of the students, faculty and staff of the Central University of Bihar, it will become a shining symbol of unity, harmony and tolerance in this region and beyond. By doing so, your institution would have fulfilled its mandate and at the same time inspired others to follow suit and make ours a strong, prosperous and united nation. I urge the graduating students to remember the timeless wisdom expounded by the philosopher Aristotle. Educating the mind without educating the heart is no education at all, he said. So, be kind and show compassion to the less privileged and the deprived. Try to become ambassadors of peace, goodwill and harmony between communities and regions in our great country. I thank the university for inviting me today. Jai Hind. Be a God unto thee. Whatever actions are irreproachable, those should be practiced. Whoever is superior to us, they should be respected. Donate with faith and modesty according to your magnificence. चलो 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 नीचे चलो फोटो कैसे नीचे रखो ना नहीं हो गया सम्माननीय कुलपति
बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर जनक पांडे, मेहनत और कामयाबी के पीछे आपकी ही कुर्बानियां हैं। आपने इस नव अवस्थापित विश्वविद्यालयों को बच्चों के रूप में अपना विश्वास सौंपा था। हम कृतज्ञ हैं।